Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the afternoon session, trading session. Sorry, and my name is Avinash, and I'll be your host for today's session. We will have guys. Am I audible, guys? Let please yes in the chat. Great, great. Guys, thank you for confirming. So we will have Deven sir with us today. So he's already here. And market की अगर बात करें तो market Nifty it's around 136 137.5% downside at 0.6 and Bank Nifty भी 0.8% downside पे तो थोड़ा अच्छा खासा एक मार्केट में हमें डिप देखने मिला है आज 140 पॉइंट के आसपास का so Deven sir is already here he will discuss in depth about the market and all the stocks जो जिसमें हमें कुछ ट्रेड अगर सेटअप दिख रहा है या तो BTS पॉइंट ऑफ व्यू में so Deven sir let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash, you are audible. I hope I am audible. Yes sir you are audible but your camera is off and let me know when we are good to Okay, go. just give me a second. I am just setting up the screen. Once I set up the screen, I'll just share my charts. Sure Devin sir. Avinash, is my screen visible now? Yes Devin sir your screen is visible. Okay. So I hope we are good to start. Yes you are good to go. Please start the session. Okay, so we'll cover Nifty, Bank Nifty, and then we will cover some stocks as well. We'll try to cover some queries. We'll try to give some overnight calls, and we'll try to cover. So today there was the RBI's policy outcome, and as expected by the markets and by the overall market participants, that we were expecting a rate cut of 0.25%, so that is 25 basis point rate cut, and RBI governor has declared that rate cut today. So that gives a liquidity into the system. The only concern that will be looked forward by the RBI is about the inflation and some GDP growth. So they have given this rate cut to increase the growth. This will help everyone to what we can say. They will have money in their hands with the liquidity flow, and that will help the consumption and GDP to grow. But the other concern goes hand in hand with this particular thing is that inflation, how the inflation will rise, and will it be in control, or some other measures need to take. But RBI governor has positively said that they will control, and they will take other requirements, other further steps to give a boost to the growth. And there are chances that even in the next policy, at least they cut with the CRR, not the repo rate, but CRR. So that is the possibility, and overall, Reserve Bank is looking into that, and that was all about today. But markets today was have traded very volatile. Currently, Nifty is trading around 23,470 levels. But if I show the intraday charts on the screen, then you can look how market has traded today overall. So we have seen that it opened over here, somewhere around here. It was a kind of a flat opening, uh, and after that we have seen that there was some profit booking overall into the market after opening over here. And again, with the RBI policies and a rate cut announcement, we have seen that Nifty has crossed its days high. It has reached over there, and after that a sudden sell-off was seen from that particular levels. And again, that sell-off have broken the day's low, and again Nifty has traded lower. And again, from the support levels, Nifty is trying to give some bounce back. But I think overall the trend, what we can say, the overall intraday sentiment is not that good, and that's why we have mostly traded put options today. We have recommended put options today. So currently Nifty is trading at 23,470 480 levels,
And on the lower side we can see over here that this is the one of the support. This is 20-day exponential moving average, so it is around 23,430 levels. So that is acting as a support on the higher side. 50 and 200-day exponential moving average are moving hand in hand, and which are close to 600, 620, 650 levels. So they are acting as a resistance. Definitely Nifty is trying to go beyond that particular levels. It made an attempt to cross 23,700, but failed, and a sharp sell-off was seen. So there is a huge volatility into the markets after RBI's policy. During the RBI's policy, and options have been more volatile than the spot levels. So this is all about Nifty, and that's why we always say that if you are trading options, then definitely you should trade with a strict stop loss, because the volatility is the game. Now we'll just look into Bank Nifty as well. So Bank Nifty was even more volatile, as the RBI's policies directly or indirectly concerned with Bank Nifty. Bank Nifty currently has broken 50,000, and just we have seen a bounce back from the lower levels, and again Bank Nifty is trying to sustain above 50,000 levels. But I think overall, the if we see today's intraday overall setup, then after opening it was bit volatile, traded lower, has broken its support of 50,150, 50,200 levels. It has broken that in the intraday itself, in the morning itself. But after the during the RBI policy, and after the rate cuts, we have seen a bounce back into Bank Nifty as well, including Nifty. Nifty managed to cross days high, and again sell off was seen, but Bank Nifty was unable to cross its days high, and a sell off was seen into Bank Nifty from 50,450 odd levels. And after that we have seen that again Bank Nifty has broken 50,200 levels. It's crucial support zone, which Bank Nifty was sustaining from last 2 days, but that crucial support zone has taken out, and Bank Nifty has also broken a major support of 50,000, a psychological level of 50,000, and trading close to that particular level. So overall, if we see the daily chart, so I think this is uh, kind of a bearish chart, and I think a sharp profit booking after a good move on the higher side. A sharp profit booking has been seen. So from now we need to watch out some more 1 or 2 days, how Nifty and Bank Nifty reacts on Monday and Tuesday, and accordingly then we will watch. There is a possibility that Nifty and Bank Nifty comes down to retest their breakout levels, which is for Nifty it is around 23,333, and for Bank Nifty it is around 49,600 level. So if they retest to this particular levels and show some reversal, then that will be a good sign again. But till then there can be a pain into the markets, so one should trade with stop loss and accordingly, and mostly trading with strategies will be more helpful compared to trading directly into options. So this is about Nifty and Bank Nifty. We have covered both the index, major index, and now we can take some queries. I am also looking onto some charts which I get. I'll definitely share for overnight trade, as well as CDIs if possible, and we will accordingly trade, because there is a kind of stock specific moves. So definitely we need to look into that. So till then, Avinash, we can take some queries, and after that we'll share overnight or any trade if possible. Sure, Deven sir. Deven sir, so first query will be on NCC. ठीक है, so the NCC अगर हम देखें तो अच्छा खासा एक करेक्शन है NCC में अराउंड 30% के आसपास, 30-40% के आसपास में करेक्शन देखने मिला हमें एनसीसी में अपर साइड से. ठीक है, तो व्हाट विल बी योर व्यू ऑन इट, विल बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन एनसीसी? आई थिंक एनसीसी के रिजल्ट के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिजल्ट के बाद एक वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ देखने मिला है. तो शायद रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा आया नहीं होगा, इसलिए शायद थोड़ा सा सेल ऑफ है. 200 के आसपास एक सपोर्ट है, 200 190, एक 10 रुपए का रेंज है, वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स है स्टॉक में.
लेकिन ये सपोर्ट्स जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट्स है अगर होल्ड कर लेते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। रिवर्सल जब हम लोग तभी मानेंगे जब तक ये 240 के ऊपर क्रॉस नहीं करता। 240 if it crosses above 240 and sustains above that, then only we will say that there is a kind of reversal in this particular counter. Till then, the bounce back can come from the support levels. But again, if anyone has purchased for short to medium term, I will recommend to exit on bounce. Being results, and we have seen some volume spike and a kind of a correction into the stock. So I think if bounce back comes, one should try to exit in this from this particular counter if it has purchased for short to medium term. Sure. Kalyan Jewelers. So we have seen a bounce back from this particular in this particular counter from last 5-7 days. From last 2 days, we have seen some kind of a profit booking from the resistance itself, 596. So I think one should go long on this particular stock only above 600 levels. 595, 596 ये एक resistance है. I think 200 exponential moving average is around 580, 50-day exponential is around 600, 598, 600. So ये levels है, यहाँ पे बहुत resistance face कर रहा है स्टॉक. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टॉक ने जब मार्केट गिर रहा था तब इसी लेवल पे रुकने का कोशिश किया, लेकिन अगेन फिर सेल ऑफ आया. तो दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस. जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक कोई रिवर्सल नहीं है. ये डेफिनेटली बाउंस बैक अच्छा था. बाउंस बैक के बाद वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड कर लेता है स्टॉक और अगेन ऊपर जाके 600 के लेवल्स क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेजी फिर से एक बार स्टॉक में देखने मिलेगी, which will pull the stock higher towards 680 levels as well. तो 680 आ सकता है. जब तक 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अवॉइड करना चाहिए. And once it crosses 600, definitely it can come towards 680 levels as well. So wait and watch करना चाहिए as of. Zomato. Okay, Zomato again कुछ आसपास सेम स्टोरी है. काफी दिनों से हम लोग ने देखा था कि एक ब्रेकडाउन आया. ब्रेकडाउन के बाद फिर से बाउंस बैक पे रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से फिर से नीचे आया. अगेन एक बाउंस बैक की कोशिश है. आज 2% ऊपर है स्टॉक. अगर ये स्टॉक फिर से ऊपर आके आई थिंक अराउंड 245 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, विच इज ऑल्सो क्लोज टू इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ये अगर लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आई थिंक एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा. शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 245 के ऊपर ही बाइंग रिकमेंडेड है. तब तक अवॉइड करना चाहिए. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन होल्ड. Right. Apollo Hospitals. ओके, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. तब तक ये स्टॉक साइडवेज है. आई थिंक ऑन द हायर साइड 7010 लेवल्स, ऑन द लोअर साइड 6700 लेवल्स. सारे ईएमएस के बीच में ट्रेड कर रहा है. 50 ऊपर नीचे 200 और उसके बीच में ट्रेड कर रहा है. सो आई थिंक जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक ये रेंज में रहेगा. रिजल्ट्स के बाद पॉसिबली ये क्रॉस हो गए. ऊपर में अगर 7000 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है, अच्छा अपमूव फिर से एक बार स्टॉक में 7250 300 के लेवल्स आ सकते हैं. वन इफ इट ब्रेक 6700 लेवल्स तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है स्टॉक में. तो फिर नीचे 6600 और उसके बाद 6400 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं. तो आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच फॉर एनी काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. टिल देन इट इज साइडवेज. GAIL. ओके, सो आई थिंक गेल शायद डिविडेंड का ये हो सकता है. करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 170 लेवल्स. नीचे में 164 के आसपास सपोर्ट है.
अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन देखने मिल सकता है। एग्जैक्टली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह लास्ट टाइम ने इसने जो है बाउंस बैक दिखाया था फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल्स विच इज अराउंड 165 लेवल्स। अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड अराउंड 182। 182 क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो ही एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है, तब तक अवॉइड करना चाहिए। So what is your view on Glenmark Pharma? जैसे ओवरऑल फार्मा काउंटर्स ने थोड़ा सा आज अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल लास्ट 2-3 दिन में फार्मा काउंटर्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। इवन ग्लेनमार्क फार्मा आई थिंक 1535 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बात किया फार्मा काउंटर्स में एक अच्छा मूव देखने मिला। सो अगेन ग्लेनमार्क इज आल्सो मूविंग वेल। मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है 1520 के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज ट्राइंग टू सस्टेन। This can move higher towards the next resistance of 1575। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे बाय किया है 1575 के टारगेट के लिए होल्ड करे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। मेरे हिसाब से इसका एक अभी 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1500 का स्टॉप लॉस रख के 1575 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में थोड़ा अच्छा मूव देखने मिला और ग्लेनमार्क फार्मा इज आल्सो doing well from the support levels and trying to bounce, and it can move towards 1575। Okay. Say view on Hindalco. आज मेटल सेक्टर्स में हम लोग ने एक अच्छा मूव ऑलरेडी देखा हुआ है। डेफिनेटली हिंदाल्को में भी एक बाउंस बैक जरूर रहेगा। यस, सो वी आर एज एक्सपेक्टेड इट इज अप बाय अराउंड 1.6% राइट नाउ। हिंदाल्को में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। आई थिंक देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 630 लेवल्स, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे परचेस किया हुआ है तो 630 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। दिस स्टॉक कैन मूव टुवर्ड 630। वहां पे देखना होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी फिर से एक रैली बन सकती है, लेकिन अगर सस्टेन ना करे तो थोड़ा सा फिर से वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। तो आई थिंक 630 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑन द लोअर साइड वन शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 590। 590 के नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। एज ऑफ नाउ ये बाउंस बैक अच्छा है, 630 तक आ सकता है अभी भी। अमित जी, डेफिनेटली हम आपका ये जो फीडबैक है we'll definitely try to incorporate, and if there will be anything we will definitely share the update with you guys. So we'll move ahead with the next stock queries, and in between, Devin sir, do we have any BTST trade for today? Yes, I am tracking some of the stocks, so I'll just share you. Yeah, so one BTST is on my radar, and that is Century Ply. So I'll just share the charts of the same. So Century Ply का आज ही रिजल्ट आया। ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आई थिंक वन शुड बाय दिस पर्टिकुलर काउंटर एट दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर BTST कैरी कर सकते हैं। BTST 866 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्टॉप लॉस कैन बी अराउंड 852 850 लेवल्स। तो 850 852 के आसपास रखे स्टॉप लॉस। कल के कैंडल का जो लो है वो 852 ही है एग्जैक्ट। तो 852 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में बाय करना चाहिए एज अ BTST। रिजल्ट्स ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छे आए, अबव एक्सपेक्टेशंस मार्जिन पोस्ट किया हुआ है स्टॉक ने। तो सेंचुरी प्लाई में 852 के स्टॉप लॉस से अराउंड 901 902 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक आज का हाई क्रॉस करके स्टॉक थोड़ा सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो 900 901 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। So guys, we have shared a BTST on Century Ply with the current market price. It's trading near 865 866. तो आपको करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है, एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 852 द टारगेट फॉर द अपसाइड विल बी 901 or 902. So this is the BTST for today, and we'll definitely move ahead with the next stock queries. And in between अगर हमें और कोई स्टॉक अच्छा दिखता है for BTST या delivery, we'll definitely share with you all.
डेफिनेटली मेरे रडार पे और भी स्टॉक्स है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहेगा आई विल शेयर BTST. टिल देन वी कैन टेक मोर क्वेरीज. PNB. ओके, सो पीएनबी अगेन 9900 के आसपास ही ट्रेड करा, काफी टाइम से साइडवेज है स्टॉक. हम लोग ने बहुत टाइम डिस्कस किया 102 का लेवल एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 102 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कोई बड़ी मूव यहाँ पे नहीं दिख रही. 102 के बाद डेफिनेटली ये स्टॉक 108 107 तक जा सकता है. सो वन शुड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 102. एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. आज भी हम लोग ने देखा, कल एसबीआई के रिजल्ट्स आए, थोड़े से मार्केट को पसंद नहीं आए, तो थोड़ा सा एसबीआई में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक गया था. ओवरऑल पीएसयू बैंक साइडवेज होके रखा है. आरबीआई के आज के डिसीजन के बाद भी पीएसयू बैंक ने एक मूव दिखाने का कोशिश किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और थोड़ा साइडवेज स्टॉक फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस के आसपास अटक रहे स्टॉक्स. सो आई थिंक 102 के लेवल पे पीएनबी पे ध्यान देना चाहिए. जैसे ही ये क्रॉस करेगा we will see a good up move. So if anyone is holding from lower levels, I think stop loss को अपना अपना ट्रेल कर लिए. मेरे हिसाब से 97 का स्टॉप लॉस ठीक है. 102 क्रॉस करने के बाद एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा स्टॉक. Great. Auto Xless can be buy at CMP. Which stocks you have said? Auto Xless. AUTO AXLES. Automotive Excellence. Okay. आई थिंक ओवरऑल अगर हम लोग काउंटर को देखें यहाँ पे तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा मतलब करेक्शन ही देखने मिला है. करंटली स्टॉक इज अप बाय 4%, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा सा फिर से आज प्रॉफिट बुकिंग आया. तो आई थिंक अगर लोअर लेवल से बाय किया है होल्ड करना चाहिए. 1840 के लेवल्स क्रॉस होने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा मूव 1870 तक आ सकता है. स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है. 1775 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे एंड स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं. पॉसिबली ये स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस बैक जो है वो और थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक को. सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस एट 1775 एंड होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 1870 1880 levels. What is the view on Titagarh? ओके, सो रेलवे स्टॉक्स हम लोग ने देखा कि बजट के पहले एक अच्छा मूव दिखाया था ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स ने, लेकिन बजट के बाद फिर से एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला और उसके बाद वापस से कोई एक बाउंस बैक के रिवर्सल कोई भी संकेत नहीं है. आई थिंक ऑन द लोअर साइड 830 के आसपास एक सपोर्ट है. उसके पहले 855 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन स्टॉक में कोई ऐसा बाउंस बैक रिवर्सल है नहीं. तो आई थिंक अगर कोई होल्ड कर रहा है 855 830 मल्टीपल सपोर्ट से वहां पे देखना चाहिए स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है. ऊपर में जब तक ये स्टॉक आई थिंक ये लेवल्स 1090 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक अवॉइड करना चाहिए. स्टॉक में कोई खास बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा है. ओवरऑल वॉल्यूम के साथ थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आई थिंक ये सपोर्ट लेवल स्ट्रेस कर सकता है. ग्रेट. आई गेस हमने एसबीआई पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसका रिजल्ट जो आया था, राइट? What is the view on Swiggy? Could you please tell us the support and resistance on a daily time frame? Swiggy, Right. आई थिंक इसका भी रिजल्ट काफी खराब था मेरे हिसाब से. ये लोग डेफिनेटली रेवेन्यू ज्यादा करते तो उसके साथ साथ थोड़ा लॉस भी ज्यादा करते, वैसा देखने मिला था. ऑन द हायर साइड आई थिंक देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 407-8 लेवल्स. नीचे तो लोस पे चल रहा है तो थोड़ा और नीचे जा सकता है. रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं थे. सो आई थिंक वन शुड अवॉइड बाइंग फ्रेश इन दिस पर्टिकुलर काउंटर, क्योंकि ये जो लिस्टिंग के वक्त के जो प्राइस थे उसके भी थोड़ा नीचे आके ट्रेड कर रहा है. सो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर. सो दोज हु आर होल्डिंग आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर ले तो ठीक है. शॉर्ट टर्म में फ्रेश बाइंग नहीं है. इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने बाय भी किया है थोड़ा हायर लेवल्स पे तो
थोड़ा लॉस बुक कर ले या तो बाउंस बैक पे एग्जिट कर ले. Great. So, guys, we are near the end of the session. So, Devin sir, do we have any other BTST or delivery idea for today before we move, or take or two, three more stock queries? Okay, so we will take one more stock query. Till then, I'm just into something for BTST, one more BTST. If I find this particular counter good, then I will share this as a BTST, and or else we will take one or two more queries. So we can take one query right now. Hyundai. Yeah, sure. Okay, so overall auto counters are looking good. Hyundai have is trading around 1900, and I think there is a resistance around 1930. And exactly if we consider today's high, then it is around 1929. So it is trading as per the levels expected. So I think those who are holding, hold, definitely hold. Keep your trailing stop loss as 1780, 85 levels. नीचे में जो ये में लेवल्स है 50 और 20 वो उसके आसपास है जो सपोर्ट करेंगे. तो 1780 या 1770 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, होल्ड करे स्टॉक को. जैसे ही ये स्टॉक में एक अच्छा अप मूव आएगा 1830 के ऊपर, सो वी कैन सी अ फ्रेश ऑल टाइम हाई इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. सो हुंडई अच्छा है, होल्ड कर सकते हैं. एमएनएम का रिजल्ट आज ही हम लोग ने देखा, अच्छा आया था. तो इवन ऑटो स्टॉक्स आर मूविंग वेल. मारुति भी हम लोग ने लगातार देखा है लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक और अच्छा मूव मारुति ने भी दिखा है. तो आई थिंक ओवरऑल ऑटो काउंटर्स अच्छा है, ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं. टिल देन अविनाश, आई हैव वन मोर काउंटर ऑन माय रडार, दैट इज मजगांव डॉक. ये स्टॉक भी आप बीटीएसटी कर सकते हैं. आई जस्ट शेयर द लेवल्स एंड चार्ट्स एज वेल. So Mazgaon Dock currently trading at, I'll just share the charts. Okay, so this is Mazgaon Dock currently trading at 2230 levels. ये स्टॉक में अभी हम लोग ने रिजल्ट देखने मिला है. मैं थोड़ा सा रिजल्ट ही पढ़ रहा था अभी इसके बारे में. सो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स आए. 2230 के आसपास जो है वो लेवल्स है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. तो ये स्टॉक में एक बीटीएसटी कर सकते हैं. One can buy this particular counter. Stop loss can be 2165 levels. 2165 के स्टॉप लॉस है. 2375 के लेवल्स के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं. सो आज का हाई जो है वो एग्जैक्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे 50 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. लेकिन वापस से एक बार ये स्टॉक जो है ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी आ सकता है. तो अगर ये इसको ऊपर आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप थोड़ा ट्रेड कैरी भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो. लेकिन एज ऑफ नाउ बीटीएसटी के लिए ये काउंटर रिकमेंडेड है. 2165 के स्टॉप लॉस है, 2275 के टारगेट के लिए मस्गांव डॉक. Great. Avinash, I hope you're clear with the BTST, the second BTST which we have given. Yes, Devin sir, could you please repeat once again the stop loss and target? Stop loss is 2165. Target is 2275. Great. So guys, we have initiated one more BTST that is on Nasdaq. Currently trading near 2237. अभी 1 मिनट में हमने अच्छा खासा स्पाइक भी देख लिया है. So with a stop loss of 2165, the target for the upside will be 2275. So Avinash, I hope we are clear. We have given 2 BTST trades as well. Result के basis पे हम लोग ने ट्रेड दिया है दोनों. So आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए एंड वन कैन कैरी. जैसे मैंने मस्गांव डॉक का कहा 2275 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कैरी थोड़ा सा कर सकते हो एक अच्छे टारगेट्स, अच्छे बड़े टारगेट्स के लिए. सो दैट इज रिकमेंडेड फॉर मस्गांव डॉक. दूसरा भी हम लोग ने सेंचुरी प्लाई जो है बीटीएसटी दिया हुआ है, दोनों बीटीएसटी आप ले सकते हो. And I think we have solved many queries as well. So if you can add something, we can definitely, or we can take 1 or 2 more queries if possible, and then we can end the session. Yes, Devin sir, we'll definitely take one more query for today's session. Sure.
So what is your view on Bharti Airtel? Bharti Airtel has posted a decent results yesterday, I think, and again, it was one of the top gainers today, and it is also up by around 3.3% right now. So I think overall chart structure is good. It has attempted to cross 1680, the resistance level of this particular counter. It is holding near that level itself right now. But overall, as we have discussed about the markets, and markets are not that good and sustaining at the higher levels. Hence, we have seen some intraday profit booking in this particular counter. But again, I think the overall chart structure is good. With the market correction, we have seen that the stock has not shown any big correction. So those who are holding, definitely hold this particular counter with a trailing stop loss of 1630. 1630 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए. ये स्टॉक एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है. इन्वेस्टमेंट काउंटर है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए. 1740 और उसके बाद ऑल टाइम हाई 1780 के लेवल्स भी आ सकते हैं. सो डेफिनेटली स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, चार्ट सेटअप अच्छा है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तब डेफिनेटली होल्ड रहेगा. Great. So I guess that's it, guys, from our end. We have covered couple of stock queries today, and हमने parallelly दो BTST trade भी दिया है. One is on Mazdog और दूसरा जो है हमने Century Ply पे दिया, right? So both the BTST trades are pinned in the chat box. Please make sure you initiate the trade and don't forget to put the strict stop loss of whatever the numbers that we have suggested in both of the stocks, right? So yes, that's it, guys, from our end. Devin sir, if you want to add more, or else we'll end the session then. So again, as we have discussed, निफ्टी ने नीचे से वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा के 23,500 के आसपास या उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने का कोशिश है. So this is about Nifty. I hope I've shared all the levels. So there is nothing much to share. Thank you so much everyone for joining, and thank you, Abhinav. Thank you so much, Devin sir. Thank you guys for joining.